So we are starting today power vocab session, and today is the day one. And day one, we are going to talk about pronunciation keys. It means how to pronounce any word. Okay. Few symbols to be practiced and understood. Guys, please, right now I request you, don't write anything because I'll be giving you this PDF to you. Okay. Don't write. If you find anything other than what you see, that's a different thing. But right now, all the details which will be here, please, you don't need to write everything. Okay. And please keep yourself in mute so there should not be any disturbance. This is one pronunciation key. You should always know this. No need to write. I'll be giving everyone this slide. This is called squa. This particular, it's an inverted E. It's called squa. You can read what is written here. It indicates a weak neutral vowel sound occurring in most of the unstressed syllables in English speech, as the A in alone, the E in happen, U in circus. आप देखो, जब भी हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं अलोन बोलते हैं, वहां पे अलग से ए लोन करके नहीं बोलते हैं. अलोन, वो जो ए है, इट डजंट साउंड लाइक ए. एक एक साउंड है जो वावल साउंड है, काफी वीक साउंड है. अलोन. हैपन. हैपन. हैपन में डबल पी के बाद जो ई है, ये ई जो साउंड कर रहा है काफी वीक साउंड है. वो समझ में भी नहीं आ रहा है कि वहां पे ई है. हैपन. हैपन. सर्कस. सर्कस. सर्कस में जो यू है, द साउंड कॉल्ड सर्कस. अब सी के बाद ई है कि यू है, आप साउंड से नहीं पता कर सकते. वो तो हमें पता है यू है, लेकिन द साउंड इज वेरी वीक. वी कॉल दिस क्वा. वी कॉल दिस क्वा. Dipanshi, your voice is not coming if you're telling something. No, I'm not telling anything. Okay, okay. I thought by your body language you're telling something. Okay, fine. Fine. So guys, squa is clear to you, right? You can simply say this and we can go ahead. Okay. So squa is a neutral sound. कहीं पे भी अगर squa हो ना, तो उसको ज्यादा साउंड मत करना ए या ई करके. उसको ऐसे साउंड करना जैसे बने उसको आप ए भी नहीं बोल रहे हो, ई भी नहीं बोल रहे हो. ये हमेशा दिमाग में रखिएगा. दिस squa is very important. It's a very dim sound. Happen, circus, alone. ये जो ए ई और यहाँ पे यू साउंड हो रहा है, दैट साउंड इज वेरी डीम. ओके, दिस इज अ फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन की. ये की बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में पता चलेगा, इसलिए अभी बस आप जान ले खाली. इसे स्क्वा बोलते हैं. ओके, whenever you see there is one overline, not underline, there's an overline above O, then the sound will become go, no, लो, सो. मतलब जो साउंड है, ओ का जो साउंड है वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है. गो, नो, लो, सो. द साउंड ऑफ ओ is not getting extended for a long time. इसका एग्जांपल हम देखेंगे जब नेक्स्ट में देखेंगे. तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, whenever there is an O and over that O there is one line. ऐसा अगर कंडीशन कभी होगा तो आप जब भी ओ को साउंड करोगे तो वो ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है. गो, नो, लो, सो. इट विल नॉट गेटिंग एक्सटेंडेड. ओके, अब नेक्स्ट में जाएंगे. यहां पे देखिए, यहाँ पे डबल ओ के ऊपर अगर लाइन होगा, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन करना पड़ेगा अपना साउंड को. लाइक फूल, सून, नून. Are you getting the difference between the last one and this one?
ओके, द लास्ट वन में साउंड एक्सटेंड नहीं हुआ, बट यहाँ पे आप जो देख रहे हो डबल ओ के ऊपर जो लाइन है, ऐसा कभी अगर होता है तो उस साउंड को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये आपको बाद में हेल्प करेगा। अभी हो सकता है आपको लगे कि व्हाई वी आर लर्निंग दिस, ये जब हम बाद में कोई वर्ड को देखेंगे, इट विल हेल्प यू टू प्रोनाउंस इट। okay, and I'll be giving you the details, don't worry. Yeah, Rishita, you are understanding? Okay, fine. Number 4, ZH। कोई भी वर्ड में अगर आपको जैसे ओकेशन, ट्रेजर, मेजर एंड लीजर, जब भी आप बोलोगे तो वहां पे जो एस आई या एस यू का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ज होगा, जेड एच, जेड एच। द साउंड ऑफ द एस will be ZH. Occasion, occasion नहीं, occasion, treasure, measure, leisure, j sound होगा। We are talking about pronunciation keys. ये जो वर्ड आप देख रहे हो, occasion, treasure, measure, leisure, यहाँ पे जो S का साउंड होगा वो ZH होगा। Similarly, like recognition, organization. Organization, right, absolutely. Organization, absolutely right. So these are the pronunciation keys. Okay, let's see the other one. This is the vowel sound when there are double O, and you will see like U-like structure above this 2O. The sound will not get extended. Is book, look. The sound will not get extended. Okay, it will be the instant sound, that is book, look. Okay, can I go ahead? You know, the time will go and learn some words, you will understand more. अभी बस आप जान लो, these are called pronunciation keys. ये अगर हमें पता होगा तो sometimes it will be easy for you to pronounce any word. You might have seen this in dictionaries, dictionary में भी ये सब होते हैं। शायद हमें उतना जरूरत नहीं पड़ता इसलिए हम देखते नहीं है, but it talks about the exact pronunciation of any word. Okay, the sound of TI और CI, जब भी TI और CI का साउंड जो है, आप जो वर्ड देख रहे हो, यहाँ पे श और शी, SH और SHEE का साउंड आपको मिलेगा। स्टेशन, एक्शन, स्पेशल, म्यूजिशियन, सो श, SH और SHEE। तो साउंड ऑफ TI और CI, ओके, कुछ कुछ वर्ड में TI या CI के जगह बस CI जब होगा आपको साउंड करना पड़ेगा श, SH और SHEE. These are some pronunciation keys. The next, GY. Whenever you find this GY like biology, apology, allergy, so यहाँ पे GY के जगह जब हम लोग pronunciation की यूज करेंगे तो वहाँ पे GY नहीं लिखेंगे, वहाँ पे JEE लिखेंगे जब pronunciation की को लिखेंगे। pronunciation की को जब लिखेंगे जहाँ पे GY होगा वहाँ पे हम लोग JEE लिखेंगे to pronounce more appropriately. By the way, if I ask you, Debashish, how will you pronounce the first word you can see? You have to unmute yourself. Biology. Biology. Okay. Yeah, Rishita, how would you sound that the next second wala word? Apology, sir. Apology.
ऐसे ही आप लोग यूज करते हो एपोलॉजी, बायोलॉजी? Yeah. Yes, sir. ओके ओके, Allergy. पता चलेगा आप लोग को कि हम लोग बचपन से क्या क्या गलती कर रहे हैं. Sir, Okay. maybe sir, sorry Yeah. to interrupt you. No, The it's okay, second fine. word maybe is apology. Apology, right? Apology. So it's basically logy, right? Yeah. वो लास्ट वाला जो syllable है, that is logy. G. Okay, fine. So, okay, we'll get to see everything. Okay, fine. Let's go ahead. याद रखना जो जो आंसर आपने दिया है, we'll need that. Okay. In some word, you will find CHAE. CHAE. कुछ वर्ड में CHAE रहेगा, बट वो साउंड के समय हम लोग KEE का साउंड करेंगे. की, न्यू की, कॉन्ग की, जब भी ये CHAE रहेगा, कोई भी वर्ड में जब CHAE रहेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन जब हम लोग करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन कीज में KEE रहेगा, लाइक की, न्यू की, कॉन्ग की. You know these words? Have you heard this word anytime? No. Okay, these are related to the inner part of our ears. Okay, the part of our ear. Okay, we'll talk about this in future. We'll see these words again. Okay. Okay, Abhishek, can you sound the first word? Army. Army. Okay. Chandan, the second one. Ardent. Okay. Ardent. 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 Okay. Yeah, Sharup, the next word. Art. Okay. अभी थोड़ा सा बना के बोलने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग आपको पूछ दे तो हम लोग यही बोलते हैं आर्मी, ardent, art, but the sound is army, ardent, art. When you use the pronunciation key, the key will be AHR. So it not be army, it will be army. 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 Right? R will not be so. Right. R will be. It will sound as there is an H. So हम लोग जब बोलेंगे या pronunciation keys को लिखेंगे तो वो AHR होगा. Army. Ardent. Okay, so Dipanshi, what is the meaning of ardent? I don't know, sir. Ardent means very dynamic personality. Okay, sir, Ardent. fine. He is a very ardent person. Ardent means dynamic, energetic. जो energy की हम लोग बात करते हैं हमेशा. He's a very ardent person. It's not ardent person, it's ardent person. Okay. So we usually speak art. We pronounce the R. Yeah. Yes, it's art. But art. now it's art. Yes, it's art. It's not art. It's art. तो गला खराब हो जाएगा अगर बहुत दिन बाद हम लोग एक चीज बोलते बोलते आ रहे हैं, अचानक से साउंड में अगर कुछ भी चेंज होगा ना, it will impact your throat because your throat But sounds and tongue. very decorative. But Yes. sounds very decorative. Yes, it is decorative. You know, we are learning to be, you know, so we are basically learning how to articulate our word so that Yes, word. yes, that's what that's what I just going to say, that articulation is really, it will go to the highest level of the articulation. If we know all these things, no, yes, it will go to the highest level of the articulation. True, absolutely. So Okay. really, no, we learn so many words, and you'll really. I'm just feel very thinking. I'm just thinking that since our childhood we are speaking all these words, army, art, all these things, and. Right. Okay, no problem. जब जागो तभी सवेरा. Okay. Okay. You can see this. The sound of Y. The sound of Y in ne, se, te, ke. Okay. Whenever we see any word where there is a syllable called NA, so but उसको जब हम sound करेंगे तो उसमें एक
इमेजिनरी एक y को ऐड करके साउंड करेंगे, लाइक ने, से, थे, खे, थे. इट हैपेंस, यू नो व्हाट, ये आप जब तक वर्ड में नहीं देखोगे तब तक मैं आपको बोल नहीं पा रहा हूँ. कभी कभी कुछ पूरे वर्ड में आपको एक जगह NA दिखेगा. जब आप उसको साउंड करोगे या प्रोनाउंसिएशन की लिखोगे तो वहां पे आपको NAY लिखना पड़ेगा, ने. When you will see such word, you will understand more. So अभी बस इसको याद रखना, ने, से, थे, खे, थे, like that we use this Y, add Y in the syllable. Okay. Okay, my God, we have got a very nice word here. Can, Rishita, can you pronounce this word? Pyromaniac. Pyromaniac. Okay. Pyromaniac. Yeah, Dipanshi, what will be the pronunciation? Pyromaniac. Okay, pyromaniac. Yeah, Chandan? Any idea? Gautam, any idea? Sam, pyromaniac. Okay, pyromaniac. Okay. What is the meaning of this word? Can anybody say? Okay. I think multi-talented. Oh my God, multi-talented. Sir, something kind of disorder. Pyro. What is the meaning of pyre? What is the meaning of pyre? Fire. We know prior. We know, I don't know prior. Pyre means fire. Fire. आग, आग. पायरोमैनियाक एक मैनिया है, एक हैबिट है जब लोग आग से चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं. चीजों में आग लगाने का एक हैबिट होता है बहुत लोगों को. इस हैबिट को हम लोग पायरोमैनियाक बोलते हैं. गौतम, मल्टी टैलेंटेड नहीं. Pyromaniac. Maniac से from maniac I thought it must be something. Okay, it's okay, fine. We are learning here. Don't worry. Pyromaniac means it's a mania. It's a habit of, you know, putting fire. कहीं पे भी बहुत लोग होते हैं ना, चीजों को आग लगाने में वो लोग को एक अच्छा लगता है. There's a kind of a mania. There's a kind of a habit. इसको हम लोग pyromaniac बोलते हैं. अब बात है कि इस something with fire. Yes. Now I really want you to say ये पूरे वर्ड में कौन सा सिलेबल, जैसे पायरोमैनियाक, कौन सा सिलेबल का साउंड थोड़ा ज्यादा होगा? एम्फेसिस कौन से सिलेबल में होगा? पाए में या रो में या मै में या नी में या एक में? स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहेगा बोलने के समय. Pyromaniac. Pie. So you want to say pie. Yeah. Okay. So according to Shaurup, it is pie में ज्यादा emphasis होगा जब मैं इसको pronounce करूंगा. Rishita, what do you think? Where should we emphasis more while we pronounce? Pyromaniac. So if you say pyromaniac, so do we say like that? Yeah, Devashish, what do you think? Emphasis किस में होगा? Sir, ro पे होगा. Pyromaniac. Okay. Not like ro. Pyromaniac. Okay. Pyromaniac. Okay. एक चीज आप जान लो. Maybe maniac. The sound of Sir, Y is ne. hidden. 1 minute. Dipanshi, yeah, go. May. Ne. Pyromaniac. Okay. Yes. जिसमें भी आज एक चीज जान लो, जिसमें भी साउंड ज्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एक्सेंट. ओके. जिसमें भी
साउंड ज्यादा आएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एक्सेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेंट। सो नेक्स्ट टाइम हम नहीं बोलेंगे कि किस में ज्यादा साउंड आ रहा है, मैं आई विल सिंपली आस्क विच इज द प्राइमरी एक्सेंट, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेंट। ओके, याद रखना, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट elaborate the whole thing. Primary accent is, some people they say मैं, some people they say pie, some people say ro. Okay, strongest जो होगा ना, strongest, अच्छा अभिषेक, are you understanding this? sir. आप समझ में आ रहा है ना अभिषेक आपको? Yes sir. Okay, okay. Anyway, this class is being recorded, तो आप उसको बाद में भी देखोगे तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? फाइन। पायरोमैनियक में जो वाला एक्सेंट प्राइमरी होगा या स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन की बनाएंगे तब प्राइमरी वाला कैपिटल में होगा। ओके, लेट्स सी दिस। अंडरलाइन जो है मैं, इसमें आपका प्रोनाउंसिएशन सबसे ज्यादा होगा। आई थिंक दीपांशी यू सेड दैट। ओके, और सेकेंडरी, पाए के बाद जो सेकेंडरी एक्सेंट होगा ये प्राइमरी है। हाँ, सेकेंडरी मतलब मैं के बाद का जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेंट होगा वो होगा पाए। सो द प्रोनाउंसिएशन की इट विल बिकम MA because it is the strongest action. इसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। अंडरलाइन किया हूं मैं स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेंट को, और ये है आपका सेकेंडरी एक्सेंट। अब ये पूरा आपका की मैं बना रहा हूं। सो हमेशा दिमाग में रखिएगा, एक कॉमा आप देख रहे हो वहां पे, it shows, and the capital, it shows that it is the strongest accent. एंड द सेकेंडरी एक्सेंट में क्या होगा, बस वो कॉमा रहेगा आपका। तो उस कॉमा से आप जान लो विच इज प्राइमरी एंड विच इज सेकेंडरी। सपोज आपको ये वर्ड कहीं पे दिखता है तो सिंपली देख लेना कि कैपिटल एंड कॉमा दो होंगे तो उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेंट होगा, और सेकेंडरी एक्सेंट होगा जो कैपिटल नहीं है बट उसमें कॉमा लगा हो। ओके, सो how will you sound it then? Okay, this is the exact pronunciation key. You can write down if you want. It's called pyromaniac. Pyromaniac. So this is the pronunciation key of pyromaniac. This is the final pronunciation key of pyromaniac. अब देखिए यहाँ पे Y नहीं था, लेकिन मैंने आपको पहले ही समझाया था कुछ कुछ वर्ड में जब MA होगा तो वहां पे हम लोग Y को ऐड करेंगे टू प्रोनाउंस इट। पायरोमे में ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेंट होगा आपका। पायरोमेनियक, इट्स पायरोमेनियक, इट्स नॉट मै, इट्स मे। दिमाग में रखना, इट्स मे महीना होता है ना, वो वाला मे। पायरोमेनियक, पायरोमेनियक, इट्स पायरोमेनियक। यस, any query? Devashish, are you understanding this? Yes. It's not pyromaniac, it's pyromaniac. Pyromaniac. Maniac, right. Pyromaniac. Yes, any query? So you can So there say, is no, in this word there is no qua. there is no any squa. There is no any squa here. Okay, there is no any squa here. Sir, Yeah, who said? Vishita. yes. सर यहाँ पे तो हमको ये पता चल गया कि प्राइमरी एक्सेंट में होगा, मैं पे मिलेगा, वो हम एक गैस से ही बता, लेकिन हमको प्राइमरी एक्सेंट कौन सा होगा वो कैसे पता चलेगा किसी भी ये word ये आपको याद करना पड़ेगा विच इज द प्राइमरी एक्सेंट। जैसे हम लोग आज आपको पता चला इस वर्ड का प्राइमरी एक्सेंट MAY है,
You have to remember that. You have to see. आप डिक्शनरी से भी याद कर सकते हो, और थोड़ा बहुत तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, बट यहाँ पे तो हम लोग पूरा फुल डिक्शनरी को लेके नहीं बैठे हैं, राइट? तो यू हैव टू गेट दिस फ्रॉम द डिक्शनरी ओनली, नो एनी अदर वे. आप इसका मतलब क्या है कि देखो, हर लोग अपने हिसाब से सेंटेंस को प्रोनाउंस कर रहे हैं, बट दे शुड बी अ प्रॉपर वे. It has somewhere it has been mentioned ki which is the strongest accent. We are not following because we are following the people whom we are listening. So we should, why you will go with what I say? You will go the way, you know, how it was made. जैसा बनाया गया है उसको वैसे ही बोलना है. So we have to understand which is the primary accent, and you will get it in the dictionary. So, हो सकता है अभी तक आप डिक्शनरी में कभी देखते हो तो वो स्क्वा वा ये सब लिखा रहता है, तो आप लोग को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अब जब आप देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी. वैसे भी हम लोग जितने वर्ड्स यहाँ पे करेंगे, I'll try to help you with all the words. ओवर बर्डन नहीं करना है अपने दिमाग को, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, आप सबको खत्म नहीं कर पाओगे. तो धीरे धीरे करके हम लोग जाएंगे, यहाँ पे भी कुछ सीखेंगे, अलग से भी हम लोग कुछ देखेंगे. ओके, now you try. Okay, now you try. Okay, ready? These are the four. Yeah. These are the four word. आप लोग कोशिश करो इस 4 वर्ड का एक प्रोनाउंसिएशन की बनाने का. उसके बाद मैं आपको करेक्ट वाला दिखाऊंगा. प्लीज डू दैट. आई एम गिविंग यू एटलीस्ट 4 minutes टाइम, एंड यू शुड नो द मीनिंग ऑल्सो. Do it. हम लोग ने कुछ प्रोनाउंसिएशन कीज किया था, शायद वो थोड़ा सा हेल्प हो आपको. कुछ वहां से आपको हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा. I'll show you the final one. Okay, I just want to know the first word. Okay, in that first word primary accent कौन सा होगा? Sir, can I? Yeah, Dipanshi. SA. SA. Okay, so it's Satiated. how do you sound that? Satiated. Sati. हाँ, Satiated. अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम लोग ने TICI में हम लोग क्या प्रोनाउंसिएशन की को यूज करेंगे? Sure. Yes, Say- अभी वो प्रोनाउंसिएशन की say- को याद करो, राइट? Satiated, maybe. Satiated. 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 Say, so say इसका pronunciation की Satiated. Satiated. pronunciation Satiated. की जब आप इसका pronunciation की बनाओगे तो S A के साथ एक Y होगा, हाँ.
say, हम लोग ने ये भी देखा है कि SAMA, it will be say, she, TI को हम लोग SH या SH भी यूज करते हैं. Say she ated. What is the meaning of satiated, Dipanshi? Any idea? Stable होना. Stable hona, okay. Very close, but not appropriate. Anyone? Stationary movement से related कुछ. Okay. We'll see that. Yeah, Gautam? प्यास बुझना नहीं बोलते हैं वैसे, प्यास बुझ गया. प्यास बुझ गया. Satisfaction. Okay, yeah, Sharup? Yes, sir. It means fully satisfied. Completely satisfied. It says here. Okay. Okay, हम लोग देखेंगे. अच्छा, next वाला word, Debashish, how will you pronounce it? Archaeology. Archaeology. Now, Archaeology. AHR, it will be instead of AR. Archaeology. Okay, R and CHAE का हम लोग ने pronunciation किया था. Archaeology. KEE. Very good. Now you can relate. Archaeology. 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 Okay. Answer. Okay, very good. Archaeology. हाँ तो As a primary strongest accent will accent. be AR. Archaeology. AHR. हाँ, Archaeology. AHR. Okay. Fine. Very good. Yeah, Rishita, what do you think the strongest accent? Quite interesting, you know. Yeah, it's very interesting. Very interesting. But it will take a lot time. In archaeology, the strongest sound is HA, na? HA. I have not yet said Archaeology. anything. Which syllable has the more accent, right? So it's either it will be R or it will be key or the next. Okay, we'll see that. Don't worry. Yeah, Rishita, you are saying something. It will be, sir, archaeology. So key is the primary Archaeology. accent. Interesting. R key. So you want to say archaeology, kind of. Or it's archaeology. Okay. मेरा खुद का गला खराब हो जाएगा इतना, you know, these words are so. Yeah, Sharup, what do you think? What will be the pronunciation? The archaeology. Archaeology. Okay, अब से ना ये लॉजी वॉजी बोलना बंद करो. Biology, archaeology. Logy is not the right way to pronounce any word. Okay, आज आपको पता चलेगा वो चीज. ठीक है. Okay, what is the meaning of archaeology? आपके हिसाब से archaeology? सर वही जो इतिहासकार होते हैं. Right, absolutely. Some people they try to discover the ancient people or ancient things. पुराना माने क्या बोलते हैं उसको, हिस्टोरिकल चीजों के ऊपर वो लोग स्टडी करते हैं. In Bengali, it is called Puratattvavid. Okay, right, absolutely right. Okay, next word is very nice. So, Chandan, tell me, how do you sound the nice, next but word? I can't pronounce it. Yes, sir. हाँ, बोलो. How do you sound, Chandan? Opinionated. Yes, sir. Opinionated. Okay, fine. Sharup, can you tell me? Please unmute yourself, Sharup, and then speak. Opinionated. Okay. Yeah, Dipanshi? Opinionated. I think Okay, Dipanshi, are you there? Obsolete, sir. Oh, Sujoy, you are there. Sorry, I somehow missed you. Okay. Yeah, Sujoy. Yes. How do you sound it? Obsolete. Okay, no, not right. Yeah, Abhishek, you also try. Sir, opinionated.
Opinionated. आज मजा आएगा बहुत. Okay. Yeah, Devashish, will you try? No, I'll not. नहीं, It's opinion, I think, but opinionated. Opinionated. I've never heard this word in my life. Okay, what? Okay, Dipanshi. Opinionated. 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 Okay. Sir, opinionated. Opinionated. Okay. What is the meaning of opinionated? I know the meaning. Strong. Opinionated. हाँ, जब अपना इमोशन, हम अपना ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, तब हम उसको ओपिनियनेटेड बोलते हैं. Okay. Opinionated का मतलब होता है कि जब हम किसी दूसरे, ये एक adjective है, हाँ? This is an adjective about a quality of a person. When some person is not ready to take others' opinion, they have their own opinion to say, but they don't take others' opinion. If I use a sentence, suppose if I use a sentence that it's very difficult to, it's very difficult to explain. It's very difficult to give my opinion to people who are opinionated. The people who are opinionated. So इसको हम लोग आज pronounce करेंगे. Last वाला word तो मेरा favorite word है. इसको हम अपने favorite student को ही बोलेंगे बोलने के लिए, हाँ? तो कौन बोलेगा? Okay. Okay, रिशिता, आप start करो. रिशिता से start करते हैं एक बार. The last word. सर इस वर्ड में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था और आपने यही पूछा. आपका दिमाग आज हम खराब करेंगे, रुकिए ना. Yeah, Dipanshi, how will you sound it? I really don't know what is the word. Bar gay dokyo. I don't know. Oh my God. So can I try? Yeah, Shahrukh. So Braggadocia. Braggadocia. Okay. Braggadocia. It will be JW. As there is GY, it will sound like G. Sir, as there is GY, it will sound Sir, as there is GY, it will be G. GY, where is G? GY is not there. Sir, I think it will be Double G. Braggadocio. Sir, I will try. Sir, brag sheet. Brag sheet? Brag sheet. Hang on, you didn't say Brad Pitt. आपने Brad Pitt नहीं बोला, वही बहुत है. Okay. इसका, इस वर्ड का मीनिंग होता है arrogant person. It's an adjective. That person is in a very simple. In very simple, अगर आपको कोई इंसान दिखता है थोड़ा घमंडी है, arrogant है, तो आप बोल सकते हो that person is very braggadocio. Okay? हाँ, but ensure कि सबको समझ में आए ये word. But this word is somehow, it's very general word and many people they understand. And now you also understand. Now you will also see this word. Okay, now we'll see how these words have been arranged. Okay, now you see. This is the right pronunciation key of say, she, a, Ted. There is a square there in between T and D. It's say, and you can see the strongest accent is say. Say, who said this? Anyone who said say? Okay, Dipanshi said this. Very good. Okay, Me too. Okay, Devashish also said the same. Say will have the strongest accent. Say. उसके बाद जो secondary accent होगा वो A पे होगा और she थोड़ा सा dim रहेगा. Satiated. 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 It means very satisfied. After a buffet dinner, she felt satiated, over satisfied. After a buffet dinner, she felt satiated. This is a very nice word. आप satisfied के जगह अगर satiated use करोगे, it will sound much better. At least इस class को करने के बाद.
It will sound, it will look good, it will sound good. At least लोगों के कान में आएगा. After I do my class, I feel satiated. Secondary, Yes. sir. Secondary accent will be AY. Why Right. why is that, sir? There is no why. You it is have to abide by the rules which has been given. There is no why. Means at least I don't So know is- why. This is the rule So we is are this- following. Yeah. So is this sentence correct? My father folded the newspaper after he was satiated with it. Yes, very good. Very nice. After he was satiated. Satiated is a verb. Satiated is a verb. So आप उसको verb में use करो जैसे आप लोग satisfied को use करते हो. आप you satiated को use कीजिए आप. Okay, fine. We'll go to the next. See Archaeology. this. अब देखो आप लोग क्या प्रोनाउंस करते हो और रियली में क्या प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए. There is no why, my dear friend. There is no why. The way we sound these words and it is really in real, it is totally different. It's archaeology. Archaeology. It's not archaeology. It's archaeology. Devashish, you have to struggle a lot. Yes. Yeah. No, I'm just kidding, but yeah. We'll have to I'm forget taking all. I'll have to forget all my childhood pronunciations. We'll have to forget all. Yes, Archaeology. So, sir, archaeology. 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 Right. Archaeology. It's not Archaeology. logy. Archaeology. Archaeology. Yes, Archaeology. it's not Archaeology. logy. Then It's biology all, will be like biology. right. Biology. Right. Biology. 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 Okay. Archaeology. Archaeology. अब से जी किसी के साउंड में आना नहीं These are चाहिए. British English, no sir? Yes, somewhere it has. The Britishers spell like this. Yes, the Britishers they use it. Spell like this. Yes. Archaeology. 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 This there is a squaw. अच्छा थोड़ा सा मैं आप लोग म्यूट कीजिए अपने आप को. A huge sound. So whenever you speak, then only you unmute yourself. Okay. So guys, see, this is the way we pronounce any word. These are the pronunciation key. It's R, key, all. Then that squaw is there. As I said, squaw will have a very dim sound. Archaeology. 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 Right. Okay. Sir, Next. maybe we are following that the archaeology, जो मतलब we are using the sound of O. Maybe it comes in UK accent, Oxford language. Right. There are some accent. Yeah, you said it right. You said it right. One is logy and one is olgy. So yes, this is, but we can use this also. It sounds much better. And when you speak, it looks more articulated. It look more more decorative English. Decorative. Okay. But हाँ, it depends कि आप किसके सामने बोल रहे हो. It matters. If you are speaking this word and the person is not really understanding कि आपने वो logy नहीं लगाया, but somehow I think you have to decide what you will say. But it sounds good. Yeah. Thank Okay, you. now you see this word. So everywhere you see the squaw is there. So it's not O. O will not be there in sound. It's opinionated. It's opinionated. Opinionated. It's not opinionated. It's opinionated. So that O will not be there. Means in sound, you will not sound like opinionated. It's squaw. So sound will be dim. It's opinionated. 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 Opinionated.
खाली पीनियोनेटेड नहीं, पीनियो के पहले जो होगा वो ओ नहीं होगा, लेकिन साउंड थोड़ा सा डिम होगा। और ओ को पूरा ओ नहीं बोलना है, उसको साउंड को डिम रख के बोलना है। पीनियोनेटेड, सिर्फ पीनियोनेटेड नहीं, पीनियोनेटेड means the people who, you know, don't take others' opinion. Then we use this word. Okay, now the last one is okay. So the strongest accent will be do, do, do. Sorry, do. See, o के ऊपर में वो लाइन है, मतलब सोच लेना कि उसका एक्सेंट एक्सटेंड नहीं होगा. It will be do, like go. So braggadocio, 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 braggadocio. Do will be with the strongest accent. Braggadocio, braggadocio. It means the person is very arrogant. That person is braggadocio. उस इंसान के सामने नहीं बोलना है कि you are braggadocio, because it might sound a slang to that person. उसको लगेगा कि आप कहीं slang ना use करो. But yes, it's a nice word to know. Braggadocio. Brag आ नहीं, brag वो sound dim होगा, अ या आ sound नहीं होगा उसमें. Braggadocio. Braggadocio. So do will be with the strongest accent. Yes. So guys, today we have learned basically we started with that ardent word. Then we talked about pyromaniac, then satiated, archaeology, opinionated, braggadocio. Anybody having any problem in the meaning or anything, you can please tell me right now. The meaning has already been said. Satiated means satisfied. Archaeology means study of historical science. Opinionated means a person is not taking anybody's opinion. In that case, we take that. Braggadocio is an adjective again for the arrogant people. Opinionated and braggadocio. Braggadocio is an adjective, right? It's an adjective. Okay. Yes, any question? I'll be sending the Even PDF. the archaeology is also there. It's not archaeology, it's archaeology. Yeah, Rishita? Yeah. Archaeology. The adjective, no sir. Archaeology. Archaeology is a noun. Archaeology is a noun. Opinionated is an adjective. Opinionated is an adjective. That person is opinionated. Or it's very difficult to convince a person who is opinionated. Opinionated, right? Braggadocio. Braggadocio is an adjective. You know, it's very important to understand कि कौन सा noun है, कौन सा adjective है, because उसी हिसाब से आपको sentence पे use करना पड़ेगा. Satiated is verb. Archaeology is a noun. Opinionated is adjective. Braggadocio is an adjective. Sir, can Yeah. you please tell me any strategy through that we can learn these words easily? Matlab, how can we use it? See, use it means the way, see, one way is the way we are learning. First of all, if you go to the dictionary, you will get to see this. These pronunciation keys we cannot make, or not any trainer can create, because it has been already made. We are the people who are the medium by which I am taking those words and giving it to you.
Now you have to basically understand that next time you start speaking this word. This is very important, and that is the reason I really want that you should use these words when you make your talk for your next class. I would request you all, we have our class on Thursday, public speaking. What is the topic, Devashish? I think Dipanshi, you don't know the topic for next day, right? Or you know? Sir, I don't know about the topic. Okay, yeah. Devashish, can you tell me the topic for Thursday evening, public speaking? Your voice is not reaching, right? Everything happens for a reason. Okay, the topic is everything happens for a reason. Thursday 7 बजे जिसका जिसका क्लास है